So finally the day has arrived, a culminating month of tireless preparation for this grand event. It's given me immense pleasure to welcome our esteemed chief guest, our Dr. Sir, Dr. Ma'am, my teachers, coordinators, special guests who have been waiting for a long time for this occasion. Special invitees, my strength, my key functionaries, the vice principal and administrative head. And the core of the evening, the young talent of our school. A very good evening. I think this good evening should be much louder. A very good evening, everyone. This evening is very special evening because after a long period of unprecedented challenges that we face, we are back in auditorium celebrating our annual function and foundation day of Holy School. I thank my all guardians for support, for everything that we do in our school, in Skyline International School. On this occasion, may I request to everyone that we as a parent, we have to teach our children the value of being satisfied. Satisfied with whatever comes your way, whatever you have not running after consumerism, after capitalism. Because that is what our children being fed on. We are human, we have to be human. If children were to teach only digitalized, I am again repeating, teaching our children, train our children to be digitalized, we are losing a race. We are human, we have to be human. And the teaching our children to be human is the key word. So, the future of our children is shaped by the lesson, the value, what we instill in them today. And in our school, in Skyline International School, we focus not only academic excellence but also on imparting the core values of the moral values to our children. So, I think I just want to express my some life journey. Yeah, everyone have a आप सभी लोगों की लाइफ में ups and downs आते या नहीं आते हैं. So क्या हम give up करते हैं? नहीं करते हैं. So I just want to express my feelings, my thoughts, my experience with the help of both. So please pay attention, everyone. वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है. जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन में हुंकार लगाना पड़ता है. भाग्य को अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है. कहाँ बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहाँ बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, ध्वंस हुआ विध्वंस हुआ, कहाँ भंवरों में फंसी कश्ती. विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है, भाग्य को अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है. क्या पत्थर की बंदिश से भी बहती नदियाँ रुकती हैं? क्या पत्थर से बंदिश से बहती नदियाँ रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? विपदा में मन के बल का हुंकार लगाना पड़ता है, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है. So as you all know, in this evening we have taken up a theme which is a कर्तव्य, and everybody knows कि घर में सबसे ज्यादा responsible person कौन होता है? वो होते हैं हमारे फादर. तो ऐसे में जब मेरे पापा ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, तो how could I forget it? So I just want to show my heart feeling
my father for everything. जो उन्होंने मुझे support किया. Whatever I am today, because of him, because of only my father's support, love, everything. So words can't express how grateful I am. Thank you, Papa, for everything.